द पेयर हुज डायमेंशन आर सेम। पहला होता है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया होता है एरिया। इक्वल टू होता है मास द डायमेंशन ऑफ एम एंड एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को एल से लेंगे और टाइम को टी से लेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया हो जाएगा L2 मीटर स्क्वायर। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा M1 L1 T-2। दिस इज ए यूनिट ऑफ फोर्स, दिस इज ए यूनिट ऑफ फोर्स इंटू L2। यह जाएगा M1 L2 पर जाएगा तो माइनस के L1 इंटू T-2, यानी M1 L T-2 इट इज़ द यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्रेशर, दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज a resisting force। तो फोर्स है वापिस इन द यूनिट डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू M1 L1 T-2 अपॉन एरिया L2। That is the final dimension of stress M1 L-1 T-2. This is our same. The answer is A. Dimension formula M1 L-1 T-2 does not represent the physical quantity. First है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज़ अ यूनिटलेस। एंड द फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि इसकी डायमेंशन है M1 L1 T-2। दिस इज अ बेस। मैं इस फोर्स को बेस मानता हूँ, क्या मानता हूँ? फोर्स को बेस, जिसकी डायमेंशन आपको याद रखनी है M1 L1 T-2, और एरिया हो जाएगा L2, दैट इज द डायमेंशन इज रिजल्ट M1 L-1 T-2, M1 L1 -1 T-2। दिस इज यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन ए। दिस इज द सेम डायमेंशन M1 L-1 T-2। स्ट्रेन दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज ए डायमेंशन यूनिट इज M1 L-1 T-2। दिस आंसर इज C. Dimension formula M1 L2 T-2 represent, that is the force। फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है M1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी M/T2, यानी कि M1 L1 T-2। दिस इज ए डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। सो वर्क डन यानी वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स होता है M1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है L1, टाइम होता है T1। द यूनिट डायमेंशन यूनिट ऑफ पावर इज M1 L2 T-2 अपॉन T1, यानी कि दैट इज द M1 L2 T-3। ओके। एंड द एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क। एनर्जी, वर्क एंड हीट have the same dimension, that is the energy is joule, work is also joule, heat is also joule unit। वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो M1 L1 T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, that is the dimension formula of work M1 L2 T-2। that is the answer is power।
The dimension of calorie. What is the calorie? Calorie is the unit of heat. Okay, it is the heat, work done, potential energy, and the kinetic energy have have the same dimension. Same dimension. So work done is the unit of joule, heat is the unit of joule, kinetic potential energy the unit of joule, kinetic energy the unit of joule. So work done unit is force into displacement. So that is the m1 l1 t minus 2 into d. The displacement is l1. The unit is calories m1 l1 l2 or t minus 2. That is the answer. So m1 l2 t minus 2. That is the answer. Whose the dimension m1 l2 t minus 1. That is a work. First take it the option work. Work is the force into displacement, and m1 l1 t minus 2 into l1. The dimension is m1 l2 t minus 2. That is the no answer. Power work upon time. So this is a work m1 l2 t minus 2 upon time. The answer is m1 l2 t minus 3. That is not answer correct. C. Angular momentum. That is angular momentum. A particle is moving in a circular path. That is the which the velocity is v and the radius r of the circular path, and the p is the linear momentum. That is the m into v. So angular momentum is m into v. That is the multiplied by radius of path. That is the angular momentum. तो angular momentum हो जाएगा mass into velocity यानी मीटर पर सेकंड upon into r. R is the radius. So unit is m1 l2 t minus 1. m1 l2 t minus 1. That is the answer is angular momentum. That's fine. Torque is the answer. That is a rigid, and there is a bar is connected to the rigid point A, and the force is applied on the free point of the bar. That is the length of the bar is L. That is torque is force into length. Force into length. Force is the m1 l1 t minus 2 into l1. The unit dimension of torque m1 l2 t minus 2. Okay. Answer. When which pair WHICH which pair have a same dimension? That is the first is stress and strain. Strain is a unitless and dimensionless quantity. See quantity, so the option is incorrect. Momentum and impulse. That is the momentum होता है m into velocity, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा m1 l1 t माइनस 1. ठीक है. इम्पल्स इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम, यानी दैट इज द m1 l1 t minus 1 t minus 2 into t,
any T1. That is the M1 L1 T minus 1. That is the M1 L1 T minus 1. This is same. Okay. Density and relative density. Density is equal to mass upon volume. So M1 into L cube is equal to M1 L minus 3. Relative density, density upon density, there is a unit less. So this is a incorrect answer. Work and power. Work M1 L1 T minus 2 into L1, that is the M1 L2 T minus 2. Power M1 L1 T minus 2 into L1 upon T1. That is the answer M1 L2 T minus 3. That is the answer is momentum and impulse. C and R represent the capacitance and resistance. Then the dimension of RC. So let's find C is the capacitance. Capacitance. The unit is charge per volt, and the resistance is volt per ampere, any current. So is equal to R into C. R is equal to V upon I into charge होता है Q upon V. That is the V से V cancel out. Q upon I. The charge होता है dimension में A into T into current होता है A से cancel out. The dimension is T. The answer is only T. That is galat. That is the right answer is wrong. Also wrong. The B answer is right. The dimension of universal gravitational constant, that is the Z. Let us find out. F any force is equal to Z m1 into m2 upon r square, dimension का square. That is the force is equal to m1 l1 t minus 2, and the distance between the two masses r square is multiply, it is the l2 upon m1. That is the m1 into m1. m1's cancel out. The final result is G is equal to m minus 1 L3 t minus 2. That is the answer. That is the answer is B is the right answer. The dimension of angular velocity. Let's find it. Simple velocity is equal to the angular velocity into radius of circular path. So angular velocity is equal to V upon R. V is equal to meter per second, and L1 upon T1 into radius is L1. So L1 is equal to T minus 1 upon L1. L1 is cancelled out. The answer is T minus 1. That is the answer is C. Dimension formula of latent heat. Let us find out. Q is the heat is equal to M into latent heat. Latent heat is the energy is absorbed or released by the body. So latent heat is equal to jaga heat upon mass. The heat is the dimension, it is same of the work. So m1 l1 t minus 2 into
L1 अपॉन मास। तो लेटेंट हीट यूनिट आ जाएगी L1 T-2 into L1. So please cancel out. The latent heat unit is L2 T-2. L2 T-2. That is the heat is equal to mc delta T. That is the C is the specific heat. Specific heat. So C is equal to mq heat upon mass into change in temperature. So specific heat unit is m1 L1 T-2 into L1 upon m1 into Kelvin. The temperature unit is Kelvin, fundamental base quantity. The m is cancelled out and the L2 T-2 upon k plus में 1 है k1. So unit of specific heat L2 T-2 into k minus 1. That's clear.